How are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, जब आप घर में होते हो तो आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो या टीवी देखते हो? So this story is based upon a person who is so used to watching TV, okay, that he is not able to leave the remote only from his hand. And let's see what happens when he gets so attached to watching TV and so addicted to watching TV. So देखते हैं, let's read this chapter called Remote Fever. Okay, बच्चों मुझे बताओ, is it good to keep on watching TV continuously? No, na, it's not good because we have to spend time doing other things also. पता है आपको ज़्यादा टीवी देखने से आंखें ख़राब हो सकती है, एक ही जगह बैठ बैठ के हम मोटे हो जाएंगे, ओके, फिर हमारा कभी कभी हम इतने इनग्रोस हो जाएंगे, हमारा खाना पीना भी छूट सकता है, ओके, हमारी आंखों के नीचे गड्ढे आ जाएंगे, ब्लैक सर्कल्स आ जाएंगे. सो वी हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, read the prologue. Research shows that watching television for long hours can profoundly affect our social and personal life. These effects include obesity, language delays in children, and learning disabilities. Physical inactivity while viewing TV reduces necessary exercise and leads to overeating. This story depicts the transformation of Mr. Sharma from an active man to an oblivious man addicted to TV. So, ये जो TV देखने से researchers ने, many people have conducted research on this, और उन्होंने find out किया है कि ज़्यादा TV देखने से हमारा जो social life है, हमारा जो personal life है, उस पर affect हो सकता है. Okay, it can affect, it can make us fat, obese बना सकते. लैंग्वेज बोलने में बच्चे अगर शांति से सिर्फ टीवी देखते रहेंगे तो बोलेंगे कब, और जब वो बोले नहीं पाएंगे तो उनकी लैंग्वेज कैसे डेवलप हो जाएगी, ओके, और फिर उनको वो नई नई चीज़ें सीखेंगे कैसे, ओके. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग अस, ओके. द प्रोलॉग इज टेलिंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एवरीथिंग इफ इट इज़ इन मॉडरेशन विल ऑलवेज work in your favor, but if it goes beyond limit then it becomes an addiction. And this story is of Mr. Sharma, जो काफ़ी एक्टिव आदमी थे, ओके, बट टीवी की लत लग गई, टीवी देखने की लत लग गई, और उसकी वजह से, ओके, वो एक एडिक्ट हो गए, टीवी एडिक्ट हो गए, ओके, और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा. ओके, नाउ लेट्स डू अ वार्म अप बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. What are the effects of excessive usage of gadgets among children? How can we reduce the use of gadgets? Discuss. So बच्चों, आजकल सिर्फ टीवी ही नहीं, okay, मोबाइल, लैपटॉप, so many different things, okay, so many different gadgets have come into picture, जिसकी वजह से हमें उनके एडिक्शन लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे अफेक्ट होता है, हमारे लाइफ पे अफेक्ट हो जाता है. So children, do you think that everything should be used in moderation? Okay, do this warm up, okay, discuss with your friends the advantages and disadvantages of all these gadgets in life. All right, now let's read this story. Mr. Sharma lived alone and was a very house proud person. Okay, he kept his house very neat and tidy. His garden was a pleasure to behold. The lawns were well manicured, the flower beds were immaculate. Seasonal flowers and perennials added color and gaiety. Flower pots on the veranda were kept brick red throughout the year. Mr. Sharma was a popular man with many friends in his office and in the neighborhood. He loved to entertain, and his friends enjoyed visiting him. Not only was he an excellent cook, but also a perfect host. When he retired, his co-workers organized a lavish farewell party for him. Mr. Sharma looked forward to a restful retirement. So जो मिस्टर शर्मा जो थे वो अकेले रहते थे, और अपने घर की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे. ओके, ही यूज्ड टू कीप द हाउस नीट एंड टाइडी रखते थे, और अपना जो गार्डन था उनका उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखते थे, और उसमें जो लॉन को अच्छे से ट्रिम करते थे. वेल मैनिक्योर्ड मतलब अच्छे से ट्रिम करना, ओके,
उसमें फ्लावर बेड्स जो लगाते थे, दे वर लाइक इमैक्युलेट, इतने सुंदर होते थे वो, ओके। फिर उनके जो बगीचे में ही हैड सीजनल फ्लावर्स, ओके, एंड जिसकी वजह से, एंड पेरिनियल्स ऑल्सो, जिसकी वजह से उनके गार्डन में एक सुंदर सा कलर आ जाता था। इट यूज टू लुक वेरी कलरफुल, ओके। एंड फ्लावर पॉट्स जो होते थे वो सबके ब्रिक रेड कलर के होते थे, ओके। सो पूरे साल दे यूज्ड टू बी लाइक मेंटेन वेरी नीटली एंड प्रॉपरली, और ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, ही वॉज वेरी पॉपुलर, okay, because he knew how to entertain people, he loved to entertain them, and उनके दोस्त उनको हमेशा विजिट करते थे, खाना अच्छा पकाते थे, ओके। और जब वो रिटायर हो रहे थे तभी उनके दोस्तों ने एक सुंदर सी फेयरवेल, एक लैविश, अच्छी खासी लैविश फेयरवेल पार्टी उनके लिए ऑर्गेनाइज की थी, ओके। एंड अब मिस्टर शर्मा जो है वो रिटायर होने वाले थे, एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ quite a good restful retirement life, okay. For the first few days he did some spring cleaning which he had been putting off for some time, but then soon, okay, he ran out of things to do. One morning he sat in front of his television set and began to watch one program after another. अब जैसे जैसे वो रिटायर हो गए, वो आराम करने लगे घर में, थोड़े बहुत तो काम उन्होंने कर दिए जो उनको काफ़ी लंबे समय से वो टाल रहे थे। बट नाउ बिकॉज इट वॉज गेटिंग लाइक अ रूटीन लाइफ, उनको और कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो एक दिन वो टेलीविज़न सेट को ऑन करके बैठ जाते और एक के बाद एक प्रोग्राम देखना शुरू करते। Mr. Sharma had always been interested in watching news on television or a cricket match at times, but on that day, he just kept his eyes glued to the set and clutched the remote in his hand as if something was going to attempt stealing it. Okay, उनको आदत थी न्यूज़ देखने की या क्रिकेट मैच देखने की एंड ऑल, बट उस दिन वो पूरा दिन अपने हाथ में रिमोट पकड़ के बैठ ही गए थे, जैसे कि कोई हाथ से रिमोट उनके छीन के लेके जाने वाला है, चोरी करने वाला है। बिफोर ही न्यू इट, it was well past his lunch time and he had made no lunch. He dashed into the kitchen, fixed himself a sandwich and went back to channel surfing. He watched into the wee hours of the morning. Then, exhausted, he collapsed on his bed. He overslept. Groggy-eyed, he brushed his teeth, washed his face and fell on the sofa, switching channels again. Soon, he stopped cooking altogether. He ordered takeaway meals and then forgot to eat them till they were cold and tasteless. So वो उनको इतनी आदत लग गई कि धीरे धीरे वो अपना लंच टाइम भी भूल गए, जल्दी जल्दी से सैंडविच बना के बैठ जाते थे फिर से चैनल सर्फिंग करने के लिए और टीवी के सामने प्रोग्राम्स देखने के लिए, ओके। और फिर वो जब थक के रात को सो जाते थे, उनकी आंखें जैसे बटन बन गई हो ऐसे वो सो जाते थे, सुबह उठते थे, फिर से वो कुछ नहीं पकाते थे, खाना वाना सब बनाना उन्होंने छोड़ दिया था, ओके। और फिर वो टेक अवे मील्स ऑर्डर करते थे, और जब वो उनको इतना भी होश नहीं रहता था कि उनको तुरंत खाएं, वो उनको ठंडे कर देते थे, टेस्टलेस हो जाते थे, और जब वो खाने बैठते थे तो तब तक तो वो काफ़ी उसकी टेस्ट ही उतर जाती थी, उनको मन ही नहीं करता था खाने का, ओके। मिस्टर शर्मा कॉन्स्टेंटली हैसल्ड द केबल ऑपरेटर फॉर मूवी चैनल्स. When he did not get what he wanted, he went out and bought a dish antenna and a decoder. But that only gave him a few additional channels. He wanted more. तो मिस्टर शर्मा जो है वो काफ़ी, उनको इतनी आदत लग गई कि वो अपने केबल ऑपरेटर को और टीवी चैनल्स ऐड करने के लिए पेस्टर करने लगे, परेशान करने लगे, ओके। और जब उसने देखा कि ये और मूवी चैनल्स ऐड नहीं कर रहा है तो उन्होंने मार्केट जाके डिश एंटीना ले ली, ओके, डिकोडर ले लिया, बट फिर भी ओके उनका मन जो है वो इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ओके, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉन्टेड मोर, okay. So now children, let's track your performance through this My Performance Tracker. Quickly answer the questions and then move ahead with the story, okay. His immaculate garden was now overgrown. The house was a mess. Dust covered everything. Clothes spilled out of the laundry bag. Dirty dishes were piled up in the sink. But was Mr. Sharma worried? No, all he would look at was the magical little screen. All he did was press the buttons of the remote.
a concerned group of friends decided to take the matter into their hands. They visited him. "Hello, said Mr. Sharma. Come and watch this latest episode of Star Trek. It's just fabulous." So, उनका जो गार्डन था, जो उतना अच्छे से मेंटेन करते थे, अब वो ओवरग्रोन हो गया था. ओके, उसकी मेंटेनेंस नहीं करी थी बहुत दिनों से. घर जो है, जो इतना साफ सुथरा रखते थे, नीट एंड टाइडी, स्पिक एंड स्पैन, वाज नाउ अ मेस. देयर वर वेसल्स इन द किचन सिंक. ओके, द डर्टी डिशेस, कपड़े बहुत दिनों से धुले नहीं थे. ओके, और उनके लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रख रहा था एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल टीवी स्क्रीन विच वॉज लाइक अ मैजिकल थिंग फॉर हिम. ओके, और वो कुछ नहीं करते थे सिवाय के रिमोट के बटन्स प्रेस करते बैठना है और पूरा दिन टीवी देख रहा है. ओके, तो अब उनके जो दोस्त है उनको थोड़ा टेंशन आने लगा एंड दे स्टार्टेड गेटिंग वरीड अबाउट हिम. सो दे थॉट कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट एंड गेट हिम आउट ऑफ दिस मेस दैट हैज़ हैपेंड इन हिज लाइफ. ओके, तो जब वो उनके मिलने जाते हैं तो जो मिस्टर शर्मा होते हैं वो उनको ग्रीट करके बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ, देख लो ये इतना सुंदर एपिसोड है स्टार ट्रेक का, कम कम, इट्स जस्ट फैबुलस. सो दे वन ऑफ द फ्रेंड सेड, गिरीश said his friend, Mohan, stop, we haven't come to watch the television, we have come to see you. I'm quite well, said Mr. Sharma impatiently. Excuse me, I really mustn't miss this program. Girish, said Raghav, come, let's go into the bathroom. Mr. Sharma looked at him incredulously. This was indeed a strange request. Look at yourself in the mirror, Girish, said Mohan. Okay, तो जो मोहन होता है, okay, वो उसको उनको आवाज़ लगाता है. मिस्टर शर्मा का नाम होता है गिरीश. वो उनको आवाज़ लगाता है कि यू नो स्टॉप, कि रुक जाओ, हम यहाँ पे टीवी देखने नहीं आए हैं. ओके, हम तुमसे मिलने आए. तो मिस्टर शर्मा जो होते हैं उनको काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, बट मैं ये प्रोग्राम मिस नहीं कर सकता. सो ही सेज ओके चलो बाथरूम जाते. सो ही वाज लाइक रियली स्टन्ड कि ऐसे क्या बोल रहा है बाथरूम जाते. सो ही से लाइक यू मस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, देखो तुम कैसे लग रहे हो. व्हाट डू यू सी? मिस्टर शर्मा लुक्ड एट द स्ट्रेंजर इन द मिरर. द मैन हु स्टेयर्ड बैक एट हिम, okay, had watery red eyes sunk into dark hollows. He had an overgrown beard and unkempt grey hair hanging about his face. His clothes were rumpled and soiled with food stains. Oh God, I look like R.I.P. Van Winkle, okay, exclaimed Mr. Sharma, horrified at what he saw. Yes, said Mohan, this is what you have done to yourself. You've got remote fever, you know. So फिर जैसे वो बाथरूम में उसके साथ चले गए, he looked at himself in the mirror. उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, his clothes were dirty, उन पे पूरा फूड के स्टेन्स थे, उनके बाल बराबर से काटे हुए नहीं थे. बहुत ही उनको रियलाइज़ हुआ दैट ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक द वे ही वॉज. उनकी आँखें जो है वो अंदर चली गई थी, वाटरी थी, लाल रंग की आँखें हो गई थी, इतना टीवी देखा था उन्होंने. ओके, सो ही आस्क्ड कि कैसे लग रहा हूँ. ओके, व्हेन ही आस्क्ड कि हाउ डू यू लुक, तो ही सेज आई लुक लाइक R.I.P. वैन विंकल. ओके, मतलब मैं एक ऐसे लग रहा हूँ कि मैं पूरे इस तरह से बिखरा हुआ हूँ. ओके, so he looked puzzled. Okay, his friends showed him the house and garden and he realized what he had done. फिर उनके दोस्तों ने जैसे पहले तो उसको मिरर दिखाया, फिर उनको दिखाया उनका गार्डन, उनका घर, और फिर उनको रियलाइज हुआ ओ माय गॉड व्हाट इज दिस. ओके, उनके दोस्तों ने पहले ही बोला था कि तुम्हें तो रिमोट फीवर हो गया है. ओके, नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट इट वाज रियली अ बिग मेस that has happened with his life because of the addiction that he had. So today Mr. Sharma still watches television, but he does many other things as well. He has adopted a dog. He takes long walks, takes care of the garden and meets his friend regularly. He has even become a member of an NGO and volunteers to teach blind children. Life is so much more meaningful. He will, however, never forget the time he suffered from remote fever. So अब
when उनके दोस्तों ने इनको रियलाइज करवा दिया, नाउ ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. ओके, अब वो टीवी तो देखते हैं बट ही वॉचेस इट इन मॉडरेशन. ओके, ही हैज़ अडॉप्टेड अ डॉग. वो वॉक पे जाते हैं, वो अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने गार्डन को मेंटेन करते हैं. उन्होंने एक एनजीओ भी ज्वाइन किया है. ओके, जहाँ पे वो ब्लाइंड बच्चों को सिखाते हैं. ओके, ही टीचेस द ब्लाइंड चिल्ड्रन एंड नाउ ही फील्स दैट हिज लाइफ हैज़ बिकम सो मच मोर मीनिंगफुल. बट ऑफ कोर्स जो बुरे दिन उन्होंने देखे, ओके, ही विल नेवर फॉरगेट दैट रिमोट फीवर दैट ही हैड in his life, okay, and how he suffered badly because of that. So बच्चों, हमारे भी कभी कभी हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमें रियलाइज करवा ही देते हैं कि अगर हम कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो. So children, everything in moderation is good, but too much of it is not a viewing, it is an addiction. So it is better that if you realize how to control it, it is always better than someone else making you realize, because that's when the guilt will take over. So children, do watch things, do use your gadgets, but in moderation. Keep a time, fixed time for it so that you can play, you can study, you can have fun, and you can talk to your friends also. Alright children, so I hope you get a good lesson from this chapter. Now reread this chapter, learn the important words, the difficult words, the meanings, and don't forget to do the back exercises.